Hello friends, my name is Atul Gadam. This video is for 10th standard. Name of content is a trigonometric ratios. This question is from R.D. Sharma, page number 10.43, exercise number 10.2 and example number 35. Read the question very carefully. If sine A minus B is equals to sine A into cos B, there is a no sign between sine A and cos B, means multiplication sign. Sine A minus B is equals to sine A into cos B minus cos A into sine B, and cos A minus B is equals to cos A into cos B plus sin A into sin B. Means here two conditions are given. This one is the first condition and this one is the another condition. Find the values of sin 15 and cos 15. यहाँ हमें sin 15 और cos 15 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये प्रॉब्लम हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन बोथ द टाइप्स, बोथ द मेथड्स. पहले तो देखिए हमें फाइंड करना है साइन 15 डिग्री का मेजर. अब साइन 15 डिग्री यानी हमें फर्स्ट कंडीशन लेनी होगी. फर्स्ट कंडीशन में एंगल ए है और एंगल बी है. अब क्या है, यहाँ हमें साइन 15 चाहिए यानी एंगल ए और एंगल बी के मेजर में डिफरेंस 15 आना चाहिए और उसके वैल्यू टेबल में भी अटेंड होने चाहिए. ओके, टेबल में भी प्रेजेंट होने चाहिए. तो कौन से दो वैल्यू हैं जिनमें डिफरेंस होगा 15 डिग्री? करेक्ट माय फ्रेंड्स, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री. इनमें डिफरेंस है 15 डिग्री का, यानी एंगल ए आपको लेना होगा 45 डिग्री एंड एंगल बी लेना होगा 30 डिग्री. अगर 45 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 15, यानी साइन 15 की वैल्यू मिल जाएगी. यानी ए की जगह आपको लिखना होगा 45 डिग्री एंड बी की जगह क्या लिखना होगा 30 डिग्री. ओके, वी विल सॉल्व. यहां हमने ले लिया है साइन ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, सॉरी एंगल ए इक्वल्स टू 45 एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. देन टेकिंग द फर्स्ट कंडीशन एज इट इज. दिस वन इज द फर्स्ट कंडीशन एज इट इज. अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, जहां जहां एंगल ए है वहाँ वहाँ आपको 45 डिग्री लिखना होगा और एंगल बी की जगह 30 डिग्री. जैसे कि ए की जगह 45 माइनस 30, यानी नेक्स्ट स्टेप होगी साइन 45 डिग्री माइनस बी फॉर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री. इज दैट क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेप only do the subtraction. Here sin 45 minus 30, that is sin 15 degree, that is equals to put out the values of remaining one. sin 45 आप टेबल में देखो या तो फिर आपने याद कर लिया होगा. sin 45 की वैल्यू होगी 1 अपॉन रूट 2 इंटू cos 30 की वैल्यू होगी sin 60 उतनी. ओके, देन साइन 60 की वैल्यू है रूट 3/2, सो द कॉस 30 इज ऑल्सो रूट 3 अपॉन 2 माइनस कॉस 45 इज इक्वल्स टू साइन 45. साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम है, दैट इज 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, हाफ ऑफ द. Is that clear? Then do the simple multiplication. This simple multiplication and this simple multiplication. Here the multiplication is sin 15 degree is equals to multiplication of numerator 1 into root 3, that is a root 3 upon root 2 into 2, 2 under root 2 minus 1 into 1, 1 upon root 2 into 2, 2 under root 2. Observe these both the fractions. First fraction is a root 3 upon 2 root 2. Second fraction is a 1 upon 2 root 2. Here the denominator of both fraction is same. Then do the subtraction. These are known as the like fractions. Sin 15 degree, that is equals to
denominator is taking 1 to root 2 and numerator is a root 3 minus 1. Is that clear, my friends? This one is the value of sin 15. Okay, we can easily find as the same way cos 15. कैसे? cos 15 की वैल्यू निकालने के लिए आपको सेकंड कंडीशन लेनी होगी. राइट सेकंड कंडीशन एज इट इज. In this step, at the place of A taking 45 degree, at the place of A taking 45 degree, and at the place of B taking 30 degree, at the place of B taking 30 degree. Then write down next step, which is very easy. Cos A minus B means 45 degree minus 30 degree is equals to cos 45 degree into cos B for 30 degree plus sin A for 45 degree into sin B for 30 degree, sin 30 degree. Then do here subtraction, simple subtraction, that is cos 45 minus 13, 15 degree is equals to put out the values with the use of table. cos 45 की वैल्यू होगी sin 45 उतनी जो कि है 1 upon root 2 इंटू द वैल्यू ऑफ cos 30 की वैल्यू होगी sin 60 के उतनी और sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2. सो द cos 30 इज ऑल्सो रूट 3 अपॉन 2 प्लस sin 45 की वैल्यू होगी 1 अपॉन रूट 2 इंटू sin 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2. देन डू द सिंपल मल्टीप्लीकेशन, दिस मल्टीप्लीकेशन एंड दिस मल्टीप्लीकेशन. Here the LHS is a cos 15 degree is equals to 1 into root 3 or root 3 upon root 2 into 2, 2 under root 2 plus 1 into 1, 1 upon root 2 into 2, 2 root 2. Here the denominators of both are same. Then cos 15 degree is equals to root 3 plus 1, that is a root 3 plus 1 upon 2 under root 2. Okay, this one is the value of cos 15 degree and make a box for the last answer. This one is the first method for finding the value of sin 15 and cos 15. In next part we will take the another one method. We can solve the same problem by different method. हमें sin 15 की वैल्यू निकालनी है, यानी एंगल ए और एंगल बी के मेजर्स ऐसे लेने हैं जिनमें डिफरेंस हो 15 डिग्री. ऐसे दो एंगल्स है मेजर्स है जो कि है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री. हियर द डिफरेंस बिटवीन 60 डिग्री एंड 45 डिग्री इज आल्सो 15 डिग्री. मीन्स एट द प्लेस ऑफ ए taking 60 degree and at the place of B taking 45 degree, because 60 degree minus 45 degree, that is equals to 15 degree. Means here at the place of angle A taking 60 degree measure and at the place of angle B taking 45 degree measure. For finding the sin 15 degree we will take a first condition which is a given. This one is the first condition. Okay, are you observe? This one is the first condition. This first condition is taking at first. This one is the first condition at the place of angle A taking 60 degree. Here these are the angle A. At the place of angle A taking 60 degree measure and at the place of angle B taking 45 degree measure. Here are the angle B. Here taking 45 degree measure. The next step is a sin 60 degree minus 45 degree is equals to sin 60 degree into cos 45 degree minus cos 60 degree into sin 45 degree. Is that clear? In next step only do the subtraction. Sin 15 degree is equals to put out the values of all these trigonometric ratios.
with the use of table. Sin 60 root 3 upon 2 into cos 45 1 upon root 2 minus cos 60 equals to sin 30 equals to 1 upon 2 into sin 45 that is equals to 1 upon root 2. Then in the next step only do the multiplication operation here. LHS is as it is, sin 15 degree is equals to root 3 into 1, that is root 3 upon 2 into root 2, 2 under root 2 minus 1 into 1, 1 upon 2 into root 2, 2 root 2. Here the denominator of both fraction is same, so these are known as the like fractions. So the taking denominator at once, that is 2 under root 2, and numerator is root 3 minus 1. So the value of sin 15 is a root 3 minus 1 upon 2 root 2, making box for this answer. For finding the value of cos 15, taking second condition as it is, at the place of angle A taking 60 degree measure, and at the place of angle B taking 45 degree measure. And next step is a cos 60 degree minus 45 degree is equals to cos 60 degree into cos 45 degree plus sin 60 degree into sin 45 degree. Then do the subtraction. Here the cos 60 minus 45, that is 15 degree, is equals to, put out the values, cos 60 for sin 30 which is 1 upon 2 into cos 45 for sin 45, that is 1 upon root 2 plus sin 60 for root 3 upon 2 into sin 45 for 1 upon root 2. Then do this simple multiplication. To the RHS, here cos 15 degree is equals to 1 in 1 za 1 upon 2 into root 2, 2 under root 2 plus root 3 into 1, root 3 upon 2 into root 2, 2 under root 2. Observe the denominator of first fraction which is a 2 root 2, and a denominator of the second fraction, this one is also 2 root 2. Here the denominator of both the fraction is the same, so these are known as the like fractions, taking denominator at once only. Cos 15 degree is equals to, taking denominator at once, 2 under root 2, and do the addition between the numerator, 1 plus root 3. Make a box for this last answer. This one is a last answer. These are the two methods for solving the same question. Hope you all are enjoyed this question. Okay, thank you friends, bye and take care.